Welcome back. Jindal Drug is a zero-debt company which is intensely focused only on agri-commodities business. I caught up with founder S.K. Jindal and his son Ajay Jindal at the new plant at Taloja on the outskirts of Mumbai to find out why they're betting only on agri-commodities business. This is what they have to say. Take a look. Mr. Jindal, Ajay, Sandeep, welcome to the show. Mr. Jindal, if I may begin by asking you, during your trading days, you dealt with all kinds of chemicals. Then what made you bet big on mentha oil? जब मैं ट्रेडिंग करता था तो इंपोर्ट का ट्रेडिंग करता था, इंपोर्ट कर करके मैं एक्सपोर्ट लोकल बेचता था। उसमें मेंथा ऑयल भी एक बड़ी आइटम थी मेरे लिए। जब मैंने देखा कि इसमें कुछ ज्यादा रखा नहीं है ट्रेडिंग में, तो मैं उसको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता था। डाइवर्सिफिकेशन इस तरीके से किया कि मैंने डाइज की फैक्ट्री लगाया, उसमें मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया और ट्रेडिंग पैरेलल रखा मैंने। करते करते दाल रोटी का बंदोबस्त पक्का हो गया। गुड वन। तो दाल रोटी का बंदोबस्त हो गया तो मैंने और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन सोचा, क्योंकि मेंथा मेरा पहले से काम था। तो मैंने मेंथा की ट्रेडिंग की 1990 में 2 साल मेंथा की ट्रेडिंग इस तरीके से की कि मैं लोकल परचेज करता यूपी से और उसको एक्सपोर्ट करता, क्योंकि ग्लोबली मेरा शुरू से बिजनेस था। क्योंकि जब मैं इंपोर्ट करता था तभी भी मैं यही ख्याल रहता था कि कहाँ किस कंट्री में कौन सी चीज सस्ती मिलेगी और यहां उसको अच्छा पैसा मिलेगा। तो मेंथा ऑयल भी मैंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, क्योंकि मेंथा ऑयल जो लोग इंपोर्ट करते थे फॉरेन में, वो लोग उससे क्रिस्टल बनाते थे। फिर मेरे दिमाग में यह आया कि क्यों ना हम भी क्रिस्टल बनाए, तो फिर मैंने मेंथा की फैक्ट्री स्टैब्लिश किया। ओके, लेट मी गेट अजय। अजय, योर होल बिजनेस इज डिपेंड ऑन द फार्मर्स ऑफ यूपी एंड बिहार. If for some reason they decide not to cultivate mint, what will you do about it? Where you outsource your raw material? Because 80% and 100% of raw material comes from these two states. Menthol is like part and parcel of development of any progressive country. Today, more than 2 million farmers are in cultivation of mint in Bihar and UP. Why? Because of the demand of this product globally. The product, when we started in 1990, was selling at 150 rupees a kilo. The peak was almost 1500 rupees a kilo in 2012. The reason that the prices were going up or continuously going up is the main motivation to the farmers to continue to cultivate mint. The land kept growing in UP and Bihar. Mint comes in between Kharif crop, which is wheat, and Rabi, which is rice. It's an intercrop. It's in between crop. Between this window, there is no other crop a farmer has. So mint gives a boost to their income of UP and Bihar. 6 million farmer families are supported by this mint product. So I'm not really scared that this product will, I will have sourcing problem of raw material. Yes, I have logistic problem. I have to collect mint oil from 2 million farmers. That's my challenge. But growth is not my challenge. Your fear is that the farmers will cultivate some other seed is not your problem? They may from year to year, from year to year reduce and increase. If they see a bonus price, next year you will see a bumper crop. But if you see a reduction in price, you'll see some farmers going out of it. That's also, I guess, protected by the fact that India is the only producer pretty much of natural menthol globally. The world. So that itself will ensure that if production comes down, the price goes up, which will bring the farmers back into the game. Okay, now let me get to